हेलो डियर फ्रेंड्स एंड पेंशन। सो दोस्तों, अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो अब डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिगार्डिंग द बैंक पेंशन स्ट्रगल स्टोरी बीइंग रिटन टू द आईबीए डीएफएस एंड कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ द आईबीए। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना फॉर लेटेस्ट बैंकिंग एंड पेंशन अपडेट्स। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ बैंकिंग एंड पेंशन की न्यूज़ डिस्कस करते हैं इन अ बेटर एंड manner. So IBA, the superpower. Yes, Indian Bank Association counts as the most powerful organization in India. The Prime Minister, the Finance Minister, the Supreme Court, the Indian Parliament, and even the constitutions of India are inferior to it. Shri A.K. Goyal is the uncrowned king, जो PNB के MD CEO, who is re-elected as his chairman, making him invincible. So, the Honorable Minister for Finance told IBA 2 years back on 11th of November 2020 that considering their significant contribution to the nation, bank employees should not be left to themselves post retirement as and they are to be granted one rank one pension. So IBA is that to consider the yelling of an old woman made by way of an emotional outburst made some 2 years back. IBA pretty well knows that the minister will be happy if she is invited to the annual greeting meetings as a guest. So the Supreme Court makes several rulings, and the banks need not carry them out unless the managing committee of the IBA clears them. So the Parliament puts in place several legislations and the parliament puts in place several legislation, so IBA has powers to keep them aside and implement what is likes. So what it likes. So hence men like CHV and Bandlish with immense strength are therefore to keep anything under control for IBA. So courts cannot touch IBA as it is not amendable to writs. So IBA has made it clear to the world that it shall not be added into litigation. So adding IBA into litigation creates unnecessarily confusion, causing cost and inconvenience to all parties to litigation, leading to delay in the disposal of the petitions. So hence it is in the interest of all the parties to the litigation not to impede IBA in petitions, says the good Samaritan IBA in its legal circular. तो दोस्तों, आप चेकआउट कर सकते हैं अभी आईबीए को कैसे आगे लेके आया जाता है, बिकॉज आईबीए आपको पता ही है एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते. सो आईबीए वांट अर्ली डिस्पोजल ऑफ लिटिगेशंस इन कोर्ट बाय फॉर हेल्पिंग देम. सो प्लीज सी द लीगल सर्कुलर डेटेड 30th September 2019 ऑफ आईबीए. उसके बाद नोट फॉर इंफॉर्मेशन. सो आईबीए हैज बीन receiving a number of communications from bank customers, members of public, bank employees, and bank retirees convening their grievance against banks, making inquiries, seeking information about banks. So IBA wishes to clarify in this regard that IBA is an association of banks and other entities in banking ecosystem in India catering to its members. Neither a government entity nor a regulatory authority, not amendable to writ jurisdictions of court and not subject to the RTE Act. So in view of the above, bank customers, member of public, bank employees and bank retirees may take up their grievance against banks, make inquiries, seek information about banks directly with the concerned bank without involving IBA. So it may not be possible for IBA to entertain or respond to such. आप अगर चेकआउट करें फ्रेंड्स, अगर जो IAS है at DFS is at the mercy of IBA. So without IBA, DFS is nothing. So DFS does not know how to manage the banks and need IBA at every point. So IBA can raise any amount of money from bank as subscription and service charges on monopoly basis. So the DFS officials on the board also will approve the payment without demur and murmur. So the absence of enabling provisions in the Banking Companies Act does not matter. उसके बाद IBA has money and even the kite will not dare to fly above it. That is money. उसके बाद चेकआउट करें आप फ्रेंड्स, तो एक्सक्लूजन ऑफ एम्प्लॉयज हु ज्वाइन सर्विस ऑफ बैंक आफ्टर 31st March 2010 from pension scheme is inconsistent with the pension scheme.
but IBA has already done it in consensus with the Union of Employees Associations of Officers through the settlement joint note dated 27th April 2010. So, but IBA could make amendments to the regulations in 2017, joining hands with the DFS. So, it is beneficial to the banks and to the government. Banks can make the owned fund. Banks can make the odd funds in the pension fund their own funds when the employees who joined service till 31st March 2010 and their families get extinct, and the government can siphon away the future contributions to be made by bank to the pensions fund into its own kitty, that is new pension scheme operated by PFRDA. So long as DFS is there to accord sanctions to any amendments to the pension regulations at its BIM and notified in its gazette, why should anyone worried about it? So आप देख सकते हैं ये 25 अक्टूबर 2022 का जो क्वेश्चन आंसर सेशन में कंटिन्यू लेटर, तो ये मिस्टर CN वेणुगोपालन जी का जो कांस्टेंट एफर्ट है दोस्तों वो अभी चल रहा है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको इस लेटर में बताया गया, जो IBA सुपर पावर है वो कैसे अपनी मोनोपोली वो कैसे फंड्स कलेक्ट कर सकती है, और उसके ऊपर ना तो हम रेट डाल सकते हैं और ना ही वो किसी सब्जेक्ट में है टू दी RTI एक्ट, ना ही उसके ऊपर हम इन शॉर्ट RTI डाल सकते हैं। सो IBA इज नीदर अ गवर्नमेंट एंटिटी, इट्स नॉट अ रेगुलेटरी नॉर अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, ना तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और इट मे नॉट बी पॉसिबल टू IBA टू एंटरटेन और रिस्पॉन्ड टू सच जो भी रेट्स हम डालेंगे या जो भी हम उसके ऊपर RTI डालेंगे फ्रेंड्स। सो IBA एक तरह से एक कब्ज है जो जिसे हम चैलेंज नहीं कर सकते, और IBA कैन truly affect the pension and pension updation and banking related matters, but we can't affect the IBA functioning. So really IBA is the superpower, and accordingly Mr. CN Venugopalan ji जो कि कांस्टेंट एफर्ट्स कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा बोल्डली यहाँ पे मेंशन करा है भी कैसे IBA एक बहुत ही मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। एंड उनके अकॉर्डिंग जो अभी श्री AK गोयल जी जो कि अभी IBA के नए चेयरमैन बने हैं, नए नहीं वो री इलेक्ट हुए हैं फिर से, बिकॉज ही इज़ द MD एंड CEO ऑफ PNB। सो अभी उनको फिर से री इलेक्शन कर दिया है एज द चेयरमैन ऑफ द IBA। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। सो उससे पहले चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना फॉर लेटेस्ट बैंकिंग एंड पेंशन अपडेट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।